Hi, my name is Bren. I'm your host. You're an aspiring red coder and an alphabet company employee. I will be giving the contest today and I will be recording it. तो आज का कॉन्टेस्ट है स्टार्ट होने वाला स्टार्ट होते ही मैं I'll resume the recording. Hello, contest has begun. Let us give the contest. Can't wait to absolutely crush this contest. I'm very confident. I'm very eager to solve the questions. ठीक है जिस ये तो इनका रोज का है. It's fine. It's fine. Okay. Okay. Website was giving कुछ issues. Let's go back to the contest. Contest is running. Let's go to the problems. Okay, creating abbreviations. Let's see. लाल कलर का क्यों आ गया? बड़ा क्वेश्चन. I think sometimes अगर कोई कॉलेज का बंदा है जो ऐसे कॉन्टेस्ट देता है, he would enjoy my channel. The beaver is given a set of words as which initially contained N words, then he performed N word, get it? Okay. Then he performed the following operation M times. The beaver forms a sequence. AC on कर देता हूँ, hold on. Give me another sec. ठीक है, मैं हूँ यहाँ. And this is a good angle. ठीक है. The beaver. Or beaver as an abbreviator or something. They then perform the following operation M times. If you form a sequence of one or more words on the set, the same word may appear in a sequence of multiple times. An abbreviation is formed from the resulting phrase. The first वाले उठा लियो, I guess. Then the beaver adds a resulting abbreviation to S and now can use in subsequent form sequence. The same word may appear in a sequence multiple. अच्छा तो okay. तो सेट से हटाया कि नहीं हटाया? You are given n initial words that were in the set S and the set of abbreviations that the beaver formed. Determine whether the beaver made a mistake and whether all these abbreviations could have appeared as a result of the operations described above. ठीक है, so I'm assuming the set does not contain the initial words, so and the number of ordinary words, the number of abbreviations respectively 6 1 2 3 4 5 6 each बीच. ठीक है, तो just again check out कोई भी abbreviation है वो अगर use हो रहा है दोबारा, इसका first letter use होगा, and then instead of using that abbreviation I can just use the original word जहाँ से आया था. So just check out कि सारे letters के first है कि नहीं present. A है, G है, B है, G है, C है, G है, A B C है, तो it's possible. Yes. Apple फिर दोबारा apple is possible. Apple is possible. Apple avocado not possible. Last part. ठीक है, that's pretty simple. Give me a sec. Okie dokie. Watch me code. D65. 65G. Okay, so strings आएंगे मेरे पास end and then M and then M and then I can just like make a set SAT and ST. Yeah, actually, जब छोटे से काम हो सकता है, why take, I don't know, F1 frequency 1 or some shit. Or just like how many F1, ठीक है. Like 26 and then uppercase next second.
All odd numbers are uppercase letters. ठीक है, 56 this for int I is equals to 1, I less than equals to n, I plus plus string s and then f1 of s of 0 minus a is equals to 1, and for int I is equals to bool okay is equals to true, I is equals to 1, I is equals to m, I plus plus string as for char ch s if uh, f1 of ch minus is equal to 0, then okay is equals to false, break, let's keep going, and then if it's true, see out yes, otherwise no. Straightforward as that. Oh, shortcut. Hold on a second. Yes. Yes. No, पूरा hold on. जैसे ही पहला वाला खत्म हुआ है प्रिंटेड आउट यस। ओह अच्छा नहीं 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 मेरा वो ओके ओके माइंड मैंने कोई चीज कमेंट आउट कर दी थी एक 87 आई बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्टिव प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा था इसलिए कमेंट आउट किया। आई डोंट नो व्हाई मुझे कमेंट आउट करने की जरूरत पड़ी बट ठीक है जो भी स्टिल कांट फिगर आउट भाई ये रेड कलर का आया है मे बी बिकॉज नोटिफिकेशन आया था पॉपअप आया था इज दैट अलर्ट आया था इज दैट व्हाई problems back problems then we have bg gigano जो भी है अच्छा बीवर्स पे है क्या आज इज बीवर्स द थीम टुडे इतना बड़ा ठीक है आई मीन ठीक है इट्स फाइन that's part of the problem. Nobody likes reading big questions though. Two giants are playing a game. Each giant has his own mountain range. You have already measured all these mountains and know the heights of the mountains in these range are and verse range are with the mountains number from left to right for B and from right to left for this. Okay. At the beginning of the game, the giants stand on the mountains number 1. This they face each other and see all their mountains and all the mountains of their opponents. Thus, if each other see all the mountains and all the mountains of the opponents, turns out that B and correct cornerstones of B, so the mountains and the range are arranged in non-increasing orders. So what you're saying is कि AI is greater than ठीक है. Okay, in this there is an example of initialization where B has arranged this. For simplicity, the mountains are depicted at rectangles with B's mountains on the left, beavers on the right. For your good mood, the giants represent beavers. ठीक है. Okay. B and were not parts on each turn they perform the same action. Specifically, the giant on his turn takes a boulder and throws it at the mountain on which the opponent is standing. As a result, the height of the mountain decreases by 1. If the giant on his turn sees that the mountain in front of him is higher, with the number 1 greater than
when he's standing on, he jumps to it. If, however, that he's standing on regular ground, the height of the current mountain is 0. That he's standing on a regular ground, the height of the current mountain is 0, and there are no more mountains in front of him. He admits defeat. B goes first. For a good, ठीक है. Note that the game can last a very long time due to the enormous heights of the mountains and the quantity, so you want to determine who will win. Pretty straightforward, just, you know. Um, so I want to determine who will win. And the number of mountains first and second giants range, respectively. ठीक है. So straight away, I'm going to start doodling because I believe that helps. Actually, give me a sec. Just a sec. मैं washroom से होके आ रहा हूँ. Okay. So, ठीक है. Let's doodle. So A अगर है, अरे यार हाथ भी है थोड़ा सा. ठीक है. So A है, A1, A2, A3. Let's just say 5. Say n is equal to 5, and we have A1, A2, A3, A4, A5. And instead of like B1, B2, like B1, B2 इस तरह से लिखने के बजाय मैं इस तरह से लिखता हूँ B1, B2, B3, B4, B5, and it's just like कौन अपने अपोनेंट को आगे तक भेज सकता है. It's like we can pretend कि वो ऐसे ऐसे है आमने सामने. You know what I mean? Like and इस तरह से फेंक सकते हैं रॉक्स को, या इस तरह से, जैसे भी. Don't think there's any harm in that. So इनका डिफरेंस क्या. Let's say A2 minus A1 is this. DA, I don't know, 2, and DB2 is B2 minus B1. So इतने सारे हिट्स लगेंगे इसको गिराने में, इतने सारे हिट्स लगेंगे इसको गिराने में. एंड देन जब गिर जाएगा, आफ्टर दैट कितने सारे हिट्स लगेंगे उसको. सो ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट. यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद इसको ऐड करना. सो इट्स लाइक समेशन ऑफ डी ऑफ I from I is equals to 2 to I is equals to n, dA. So for A, summation of dAi, for where dAi is equals to A of I minus A of I minus 1. इसको अच्छे से लिखूंगा मैं. So this means is कि d of A of I is equals to A of I minus A of I minus 1. So summation of d of A of I, where I ranges from 2 to n, plus A of n, right? Summation of this, इतने hits लगेंगे, hits required to defeat A. And if I'm not correct, जब पिछले वाला minus एक कम हो जाता है, +1, अच्छा +1 लगेगा, एक कम हो गया +1. सो ये क्यों खोल दिया मैंने, ये क्वेश्चन मैं कर रहा था. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So for every this,
+1 बिकॉज लाइक एक 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 कम होगा उससे, तब जाकर वो नेक्स्ट वाले पे जंप करेगा, राइट, एंड देन अगेन द होल थिंग रिपीट्स. Actually, it's like it's gonna should be like absolute value because हाँ ठीक है, the absolute value of this was उल्टा है, ठीक है, a -1 minus that I can just make it like that, है जो भी. तो इतने hits required हैं उसको n-2 n-1 ऐड कर सकते हैं, like summation of d, खैर जो भी. इट्स सारे हिट्स रिक्वायर्ड ए को हराने के लिए, इट्स सारे हिट्स रिक्वायर्ड बी को हराने के लिए, तो बी के पास इतनी इतनी लाइफ है, ए के पास इतनी लाइफ है, सो इफ लेट्स से हिट्स फॉर हेल्थ ए एंड हेल्थ बी है, ठीक है. हेल्थ बी, अगर इफ हेल्थ इज लाइक इक्वल्स टू हेल्थ बी, देन क्या मतलब ए की हेल्थ बी के बराबर, बट ए बी को पहले खत्म कर पाएगा बिकॉज ए की चांस ज़्यादा है. सो A has to be just like greater than equal to health A, just has to be greater than equal to health A for A wins. Sorry, health B, and health B has to be like strictly greater. अगर वो बराबर भी है, A पहले चलेगा and वो 0 हो जाएगा पहले. That case no. और हर बार में एक ही बार करके घटा, हर मूव में वो they can only decrease it by 1. So हाँ, health A is greater than equal to health B. A wins, otherwise no, otherwise B wins. And मुझे प्रिंट क्या करना है, 1 या 2, ठीक है, तो A wins then 1, B wins then 2. Okay, let's code this out. D65, 65G, int n, c n via +1, b n +1 for int I is equal to 1, I is equals to n, I plus c of a of I, int I is equals to 1, I is equals to n. Int health A is equals to 0, health B is equals to 0, for int I is equals to 2, L is equals to n. Actually, health this should be A of n, should be B of n, and then there should be HA plus equals to A of I minus 1 minus A of I plus 1. HB is plus equals to B of I minus 1 minus B of I plus 1, and then if HA is greater than equals to HB, C out 1, L C out 2. हाँ, why would it get stuck on a loop? मैंने इनपुट नहीं लिया. एन लिया इनपुट, फिर ए और बी दोनों इनपुट लिया. दूसरा, एक सेकंड, दूसरा वाला नंबर किस लिए था? ओ, ए और एन की अलग अलग है, बट अगेन दैट शुड नॉट मैटर. लास्ट में आना तो सबको एंड पे ही है ना, आना तो सबको 0 पे ही है, और दैट टू एंड ऑफ द एरे, सो दैट डजंट मैटर.
M. M. I mean, you could common लेके कर सकते हैं, but खैर छोड़ो. You can just do it like this: HB plus B of I minus 1 minus B of I plus 1. 1 2 2 2 1 2. एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है? ओके. हाँ. VG नहीं, नहीं, G Y trigonometry. ओए, डिसेबल आ रहा था. Now what we do is we go back to the dashboard. We go and see. Hope it's correct. It's correct. Pretty sure it's correct. Come on. There we go. Spying on the beaver. You are given it. Oh, tree. Nice. Tree का question. देखो मेरा ऐसे मानना है ना कि like अगर कोई अगर आसान टॉपिक है, like okay, let's say certain level, let's say C पे आ रहा है या D पे आ रहा है, अगर आसान टॉपिक है, जो जो जिस टॉपिक पे है, अगर arrays है या strings है, then क्वेश्चन का लेवल टफ होगा. लाइक दिस इज अ टफनेस लेवल फिक्स है. सी का एक सर्टेन टफनेस लेवल होना चाहिए, ठीक है? अगर एरे का ये कुछ आसान टॉपिक है तो उसका लेवल हाई होगा. और अगर टॉपिक थोड़ा सा एडवांस्ड है, टॉपिक्स लाइक ट्रीज या इंटरैक्टिव है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम होगा. समझ रहे हो? लाइक देयर इज अ बैलेंस. सो सिंस ट्रीज इज थोड़ा सा एडवांस, माय गेस इज इट्स एन इजी क्वेश्चन. You are given a rooted tree with n vertices. But why does it excite me? Why does an easy question excite me? Does that mean I'm scared of challenges? I'm not scared of challenges. I'm just saying. I was just saying कि I, from my observations and my past experiences, this is supposed to be an easy question. You are given a rooted tree with n vertices numbered from 1 to n. ठीक है? Vertex number 1 is the root of the tree. The beaver initially located at the root travels through the tree to one of the beaver's branches. The vertices number A1 through AM, and I'm guessing AM has to be less than n. ठीक है? You need to determine which of these m vertices the beaver went to. ठीक है? You can place cameras on एक second. Interactive है क्या? नहीं, interactive नहीं. To do this, you can place cameras on any edges of the tree. If the beaver traverses an edge with the camera on it, you will see this for clarity. We assume that all of the you will receive a sequence of edges with cameras in which the beaver was observed passing through the corresponding edge. Since cameras extensively, it is necessary to use a minimum number of them sufficient to uniquely determine beaver's destination. You are required to state the minimum necessary number of cameras k and the edges on which they should be placed. ठीक है? For each test case output, exactly one line output first output k number of required cameras, and then the same for which of the cages connecting the vertices. For each of the cages connecting the vertices U and PU where the camera needs to install. Oh, U and its parent where the camera needs to install output the vertex. Acha, P. Sorry, you multiple lines, you can output any of them. Second line contains first and the parents of vertices from the second to nth. Second line, the third line contains integer n. The number of vertices containing the beaver m, the previous dams, the fourth line there are m integers. Once like m, the number of vertices, all these are distinct. ठीक है? Okay. Okay, interesting question.
ओके, इसको ना मैं थोड़ा सा अपने टाइम पे सॉल्व कर, मैं थोड़ा कैमरा के सामने सॉल्व करना इज लिटिल बिट, इट पुट्स मी ऑन द स्पॉट, ठीक है। ओके, सो मुझे डिस्गस्टिंगली सिंपल solution आया है दिमाग में. I'm not sure if it's correct or not. I'll just code it out here. If it's correct, in that case, well, we'll know it's correct. तो फिर मैं आगे समझाऊंगा क्या अप्रोच है, rather than because मैं भी समझा फिर वो गलत हो, that's just a waste of time. Not really a waste of time, but still. मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना, ऐसे जाने ना दूंगा जाने. Somebody's outside. हेलो. हाँ, तो सोल्यूशन राइट. ओके, सो अगर m एंड पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो पहुंच सकता है, आंसर इज ऑलवेज गोना बी m-1. m-1 क्योंकि आई मीन ठीक है, m-1. नाउ अगर 1 है तो 1 को हटा दूंगा एंड आई एम जस्ट गोना प्रिंट आउट द पेरेंट्स. अदरवाइज आई एम जस्ट गोना प्रिंट आउट द लाइक लास्ट फ्यू ऑफ द पेरेंट्स. बट वैसा केस है जहाँ पे लाइक एंड में बहुत सारे हैं. 3 अगर है यहाँ पे नहीं है, तो अगर ये 2 हैं, मुझे पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ गया कि नहीं गया. ओके, नहीं ठीक है ठीक है, इतना आसान भी नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. लाइक अगर सेम उस पे है, सेम सब ट्री पे है, मैं लास्ट वाला नहीं छोड़ सकता. मैं फर्स्ट वाला, मुझे ओके, मुझे एक ऐसे कैंडिडेट खोजना पड़ेगा जो मैं छोड़ सकता हूँ. दैट कैंडिडेट हैज टू बी क्लोजेस्ट टू 1. गॉट इट. सो जितने भी हैं उनकी मैं डेप्थ निकाल लूँ, और विच एवर वन ऑफ देम इज क्लोजेस्ट टू 1, एंड डजंट मैटर लाइक, अगर टाई है तो कोई सा भी ले लो. आई एम गोना रिमूव दैट. ठीक है. ओके, गॉट इट. तो डीएफएस वाला क्वेश्चन है ये. int void dfs depth int n int var vvi ampersand tree vi ampersand depth for int I t n if I is equals to var continue. ठीक है. and then dfs I comma n t depth. ठीक है. another thing is कि depth of I is equals to depth of n plus 1. ठीक है. ठीक है. now parent की एरे दे रखी है plus 1, नहीं n plus 1. then for int I is equals to 2, I is equals to n plus plus sin p of I. एंड अच्छा, अब इससे मैं v बना सकता हूँ, वी वी आई टी. दो चाइल्ड, एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते, तो मुझे जरूरत है इस तरह के एरे की.
n plus 1. How many? No, what can it be? N plus 1 for int I is equals to 1, I is equals to me. सही है. I2 I is equals to n because pair of 1 0 means कुछ नहीं है. T of P of I dot pushback I and T of I dot pushback P of I. ठीक है. Now we are depth of n plus 1 DFS depth. N is 1 means पहला वाला 1 then 0 then T then depth. तो हर किसी की depth पता चल गई मुझे. अब जो नया array हुआ which is of size m, int m cnm pia m plus 1 or int I is equals to 1 is equals to n m cn of I कौन सा मुझे हटाना है वो बात, राइट? सो int vc value to compare vdc value to compare is equals to, let's say, infinity, meaning depth of a of 1 and int idx is going to be I, meaning 1. For int I is equals to 2, I is equals to m I plus plus if depth of a of I is less than VTC, then VTC is equals to depth of I, and then x equals to I. Okay, then after this, just see out m minus 1 for int I is equals to 1, I is equals to m I plus plus. If I is equals to y dx, continue or see out a of I. This should be the answer. Let's check it out. DFS depth was not declared, you say. अच्छा 64 D. हाँ ठीक है. 68. Hmm. Depth. Okay. Let's hope this is correct. If not, we are in trouble. I like the name Spying on the Beaver. Okay.
Oh, it's correct. ठीक है, my intuition was right. थोड़ा सा इंट्यूटिवली सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं कुछ बीच में. Am I gonna solve D? Can I solve D? Do I have the energy to solve D? Nah, nah, nah. They're not gonna attempt D. ठीक है. Let's see मेरी standings क्या है. 3000 something, not bad. Let's say मेरी friends की standings क्या है. Actually इसमें नहीं देखता हूँ. मैं अपने इस अकाउंट पे देखता हूँ. I think this is it, my viewers. See you in the next one. अगला कॉन्टेस्ट है वैसे कब? जब भी होगा तब बनाऊंगा वीडियो. ओके. समवन गुड गाय. मनित पराग मेरे से बहुत ज़्यादा फास्ट ऐसे. हाँ, ये मेरे ऑफिस के दोस्त. ठीक है. अकड़की. मेरे को उनका वो देखना है. देख नहीं सकता क्या मैं? चलो कोई बात नहीं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.